Hello students, today we are going to explain about the fundamental unit of life from class 9th. So हम इसमें क्या पढ़ेंगे? What is cell? Cell is the structural and functional unit of life, है ना? Structural and functional unit of life because our body or any organism's body main function is started at cell, है ना? और एक एक सेल को जोड़कर वी आर गेटिंग टिश्यू एंड व्हेन दिस टिश्यूज आर जॉइन टुगेदर वी गेट organ system, and from organ system we get an individual. Clear? And that's why we can say cell is the structural and functional unit of life. So if you see this cell, this is an animal cell. ये एक animal cell है. In this animal cell you can see the different components of the cell, including the cell membrane, which we called plasma membrane. You can see. Number 2, we are having here nucleus. Number 3, we are having the cytoplasm. And these three are the functional region of a cell. ये तीन क्या है? These three, 1, 2, and these three are the functional, functional, functional region of a cell. ठीक है, याद रहेगा बच्चों? I hope clear. So these are the different components which we call organelles we come across in this topic. Now what are the different types of cell? Cell दो तरीके के होते हैं on the basis of the types of nucleus. On the basis of type of nucleus, nucleus के आधार पर. So it can be prokaryotic, it can be eukaryotic. Now you can see what is the difference between prokaryotic and eukaryotic and what is the similarity. Both of them are having DNA, both of them are having cytoplasm, both are having nucleoid. You see, in case of prokaryotic, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? We can see the prokaryotics are having nucleoid region, है ना बच्चों? But for eukaryotic we can see nucleus. So we will discuss what is nucleoid region, what is nucleus. Both of them are having ribosomes and both of them are having plasma membrane. Now on the basis of their size हम देख सकते हैं ये 0.1 to 10 micrometer, 1 micrometer 10 to the power minus 6 meter, और those who are eukaryotic वो 10 से 100 माइक्रोमीटर. तो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक बड़ा और प्रोकैरियोटिक छोटा. यूकैरियोटिक are bigger in size and prokaryotics are small in size. Now second topic is this some common features in prokaryotic and eukaryotic. Although they are different on the basis of the nucleus, but what are the similarities that we are going to study? Now once again I would like to tell you that they have the genetic materials. Both of them have the genetic material, that is DNA. But in case of prokaryotic, there is no nuclear membrane. But in case of eukaryotic, there is a prominent nuclear membrane. You can see there is a prominent nuclear membrane and which is having lots of pores around it, and which are called nucleopore. Clear? तो ये साफ है कि भैया इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. किसमें? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसीलिए दैट रीजन, ये जो बच्चों रीजन है हमारा, ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रीजन इज कॉल्ड, ये जो रीजन है यही रीजन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है. क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड. वी कॉल इट न्यूक्लियोइड. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो इन दिस वे वी कम टू नो कि जिसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है मगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. मगर जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब न्यू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. सो ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ, कैसा? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है और इसमें दे हैव ट्रू सचमुच का न्यूक्लियस है. दे हैव ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस. ओके. Now what is a common feature in them? You see, common feature can be explained on the basis of cell theory. Now cell theory, we all know Sivan and Skeleton, they have given the cell theory and which was expanded by Rudolf Virchow. Am I clear? तो पहला दो जो है वो स्केलिटन एंड सिवान ने दिया था और उसने कहा, क्या कहा इन्होंने? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. And number 2, the cell is the basic unit of life in all living things. And Virchow ने क्या कहा? All cells comes from pre-existing cell. All cells comes from pre-existing cell. ठीक है? Now, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि
प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगर हम बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं तो वी कैन सी अगेन हियर कि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है जॉजिब सर, यू कैन सी यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। इनके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच वी कॉल्ड पाइलस या पाइली। ओके, इनके पास भी राइबोसोम है और इनके पास भी क्या है बच्चों, इनके पास राइबोसोम है, इनके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास फ्लैजिलम हो सकता है, इनके पास न्यूक्लियोइड है, जिसका मतलब देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एम आई क्लियर? इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। फाइन, नाउ ये जो पार्ट है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है बच्चों, ये है नंबर 1 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप क्लियर। ये क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल है बच्चों, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ ये जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं दे ऑल आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन यूकैरियोटिक। भैया इसमें बहुत जटिलता नहीं है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी, दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका न्यूक्लियस जो है दैट लैक द ट्रू न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं, दैट मीन्स दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल DNA is not enclosed. DNA तो है but it is not enclosed in the nucleus. It is present in the region and that is called nucleoid. Very very important. What is nucleoid? This type of questions you can get in exams in the form of assertion, MCQ, short questions in any form. Okay. Organelles किसे कहते हैं? These organelles in case of prokaryotic, the organelles are lack membrane bounded form. That means prokaryotics are also having organelle. You can see sir ribosome is there, but this ribosome is not surrounded by any membrane. Okay, so इसके पास membrane बिना organelles होती हैं। सेल वॉल क्या होता है? डेफिनेटली सेल वॉल ऑफन, इसके जो सेल वॉल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पिप्टाइडोग्लाइकन, जो कि नॉर्मली हम बैक्टीरिया में देखते हैं, एंड विच वी कॉल म्यूरिन, और जो प्लांट्स में होती हैं उनको हम लोग वो सेल वॉल इनसे अलग कैसे हैं प्रोकैरियोटिक से, बिकॉज इन प्लांट सेल वॉल the cell wall is made up of cellulose. तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म also have this cell wall, उनके पास भी cell wall है। How this cell wall is different from eukaryotic cells or plant cells? Definitely in case of prokaryotic we call it peptidoglycan, which we call murin, or in case of plant we call it cell wall. Cell wall is made up of cellulose. Clear? Now we are talking about eukaryotic cell. अब बच्चों यूकैरियोटिक सेल जब हम कहते हैं, दिस इज द फिगर फॉर द एनिमल सेल, दिस इज द फिगर फॉर द प्लांट सेल, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। व्हाई सर? बिकॉज यू कैन सी दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, एंड यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल पोर, यू कैन सी दीज आर द स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियर पोर। आई होप क्लियर। They also have thread-like structure, chromatin. They have nucleolus, where the ribosomes are created, and they have nuclear envelope, and that's why they are called eukaryotic cell. In case of plants also हम देख सकते हैं, ये plants में भी eukaryotic cell है, nucleus is having a wonderful membrane, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ membrane है, and these are the diagrams of eukaryotic cells. Now if we compare the eukaryotic with the prokaryotic, हम देखेंगे size and complexity. Definitely they are larger and more complex than prokaryotic cells. इनका जो न्यूक्लियस होता है दे आर ट्रू, जॉजिब सर दे आर ट्रू बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विच इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में इनके पास डीएनए होता है जो कि बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस फॉर्म में, क्रोमोसोम में विद इन द न्यूक्लियस। सो व्हाट आर द थ्री रिलेशंस वी आर गेटिंग? नंबर 1 डीएनए जो क्या बनाता है, क्रोमोसोम, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस। तो सर क्रोमोसोम किससे बनती है? यस, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। याद रखिए डीएनए प्लस प्रोटीन से बनती है, they are made up of DNA and protein. Okay, and organelles are having various membrane bounded organelles. जितने सारे organelles हैं आप देख सकते हैं here, all the organelles, whether it's mitochondria, whether it's a lysosome, vacuoles, and endoplasmic reticulum, Golgi bodies या Golgi complex, everybody is having their own membrane. So these organelles are having membrane bounded structures. Okay, so what's the difference in prokaryotic and eukaryotic? First, the nuclear membrane is present in eukaryotic, prokaryotic में absent रहता है। organelles के पास membrane होती नहीं है prokaryotic में, but eukaryotics में होती हैं। cell wall, if it is we are talking about the plant cell, तो भैया इनके पास cell wall होती है, मैंने पहले ही कहा it is made up of cellulose, but not all. That means plants cell, animal cells में cell wall नहीं होती है। So what are the different type of eukaryotic cells? Definitely plant cells, animal cells, plant cells, fungi and protista. Protista, these are like amoeba, paramoecium, euglena, ये सारे protista में आते हैं।
Clear? So in this way we come to know about this topic. I hope you all are cleared, and the small questions that can be expected from here, you all can do it nicely. Okay, thank you.